audible? Okay. Good morning, everyone. Actually, आज आम पाखे उपस्थित अच्छा मिस तेजस्विनी बेहरा जी की OCS रे रैंक 1 पाइथिले 2020 रे एंड UPSC रे रैंक 561 पाइथिले 2022 रे. ओके, वर्तमान से ट्रेनिंग रे अछंती प्रोफेशनल IAS रे अछंती. तो मु फर्स्ट रिक्वेस्ट करबी हम डायरेक्टर सर को, सर please come on the stage and felicitate to our alumni, Miss Tejaswini Behera. Ma'am, please come on the stage. Ready करते. Ma'am, I am requesting to you, please come on the stage. Start. Hi, hello everyone. Very good morning. It's a Sunday morning. Sakala 9 रे अपना आश्चंदी. This is myself. Man, I am motivated to see you all because मु एटी कैसे आप रूबरे टिके reluctant थिले कि गोटे Sunday morning इतने सकाळु केमती जिबी. But I'm very proud of you all कि अपना माने एटी आश्चंदी. First of all, congratulations कि अपने decision टा नेले कि exam टा लिखिबे. Because first of all, this exam is not easy. 1000 OPSC कथा जदि कहबी, it's only 400 odd seats जहाँ एथरिक बाहरची. ता भितरु OS रा सीट टा भी बहुत कम, around 100 or something like that. And UPSC रा देखिया गले across India, across services, only 1000 odd seats. So there is no other way to say this, but this examination is difficult. Also because competition भी एते अच्छी. आपनकर नेक्स्ट जे बसिछंती सी भी सेही मटेरियल पढुछंती तांको पाखरे भी सेतिके टाइम अछि 24 आवर्स ता भितर से 15 आवर्स लेट्स से पढुथिबे और लेट्स से 10 आवर्स पढुथिबे सो एवरीबॉडी इज रीडिंग द सेम मटेरियल सेम टाइम सो दिस इज डिफिकल्ट प्रोसेस बट नेवरदलेस टिके मो विषय कहि देबी सो करंटली आई एम पोस्टेड एज अ आईएएस प्रोबेशनर इन अनुगुल डिस्ट्रिक्ट सो एज मैम मेंशन ओसीएस क्लियर करथली 2020 रे एंड तापरे UPSC clear करथली 2022 रे and I have done my graduation from Delhi University economics रे and तापरे post graduation भी करिथली economics रे from JNU. So saying that if I just say I have cleared OCS in first attempt and UPSC रा second attempt रे करथिली. Having said that, none of my relatives or parents are in this civil services se nahanti. Two of my elder brothers, they are also in the private field. And having said that, moro kichi engineering background bhi nathila. And but one thing that I had is that the strategy how to clear it. For me, it has only been the exam ta clear karibar achi. So whatever is required for the exam, ta upar adhika focus karithili because material to bahut achi.
बहुत जिनस flooded in the market, so many institutes, so many material, सबुदिन किछि ना किछि नुआ होची in the field of it. So there is a lot, but what bare minimum we require, how much we can revise, केते reproduce करि परिबा exam रे, केते भलो presentation skills रहिबो, that is all that matters to clear this examination. ठीक अछि. So बाकी saying that I think माने fresh patch बोधे. So you must have be having गोटे basic broad line थिबो कि what all books to be read. Sei books mu भी follow करथिली, nothing new. हाँ टिके एपट सपट something somewhere किछि new पढ़िथिबी, but those are the books that I stuck to. For example, prelims रे sei Spectrum, Lakshmikant, Science and Technology पाई any of the coaching institute रो जो material मिले, monthly magazines मिले, current affairs पाई daily newspaper reading, तापरे editorials पढ़िबा, आउ जेमति रेगला geography पाई NCERTs very important. You all know, you all know it very well. कौन पढ़िबार अछि कौन नहीं, what to avoid also. For example, post independence रे mains रे questions बहुत कम आसे. So I personally had left that topic. मु एबे भी जानि नहीं after independence what political progress our country went through. In fact, I'll be sharing this with you. World history रो किछि topics को छाड़ी देले, World War I, World War II, American Revolution ताको छाड़ी देला परे there are so many topics जोटा मी कवर करिया मते टाइम ही मिललानी, because से जो cost to जो return to cost ratio था ताटा बहुत कम, मे बी तापरे questions न आसी पारे, और मे बी एमती question जोटे generalized question आसीबो we can write it without even any much preparation. So I had left that. So this is up to you to take a decision कि को topic ऊपर आपण को अधिका focus करियार अछि आ कोटा को कम focus करियार अछि, and but the basic thing is that आम हातरे बहुत uncontrollable जिंस माने बहुत there is a lot of uncertainty also that is going on. जेमति pattern change होची. For example, OCS रा pattern 2 वर्ष तले change हे गला. I have written the examination with 2 optionals, but for you it is 1 optional. Now एथरे ओडिसा रा history, geography include करि दैछंती, ओडिसा रा culture include करि दैछंती, plus I think essay भी दीटा कर दैछंती. So pattern is changing. What you have in your hand is जोटा आपण माने control कर परिबे. That is basics, जो basics books रह गला. Second is a lot of revision, जत्ते आपण revise करि परिबे, मन रखि परिबे. Third is answer writing practice, and fourth is how you present yourself in the examination. Gutte borso jodi, acha, how many of you are working? Is anybody working here or full time students? Okay, 2 of them. So I agree, tanko pai time might be a constant, but for rest of you entire day ta achi. After you are done with your classroom coaching here, apna nije time ta kemti sati spend koruchanti, that is completely up to you. And ei 1 year preparation ta jota apna karibe, so एथरे आपनकर निजर पर्सनालिटी टा भी डेवलप हुए. So everybody comes here and talks कि books एटा एटा दरकार, but गोटे जिंस एग्जाम टा क्लियर करिया पे दरकार, you also need certain skill set. समस्ते IIT JEE क्वालिफाई करंतिनी कि समस्ते नीट भी क्वालिफाई करंतिनी, सबो एग्जाम पे डिफरेंट स्किल सेट, डिफरेंट माइंडसेट दरकार अछि. फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स रे MCQ क्वेश्चंस आसे, so MCQ सॉल्व करिबार भी गोटे टेक्निक अछि. How, like which option एटा कबे हे ही परिबनी, एटा एलिमिनेट ही करिया को पड़िबो. और फॉर एग्जांपल कि एमती आजिकली जेमती आछि only one and 2 से क्वेश्चंस को केमती अटेम्प्ट करिवार अछि. So that comes to practice, and say practice टा you have to do it from the day 1. I'll come to that. I'll come to the skill set. So prelims by a skill set टा हे गला. In mains, in OPSC we are writing 15 questions, and in UPSC we'll be writing 20 questions. दीटांको पेपर 250 मार्क्स रो पेपर टा कंप्लीट करिबा with a presentable handwriting, with diagrams, with a conclusion and an introduction. That also requires a skill set कि आपण केते जल्दी लिखुचंती, केमिति handwriting रे लिखुचंती. So this will not come से जो 3 मास मिलिबो प्रीलिम्स और मेंस बिसरे एही टाइम रे हबनी. आपण फर्स्ट दिन रो ही स्टार्ट करंतु. जेमति कि फॉर एग्जांपल एही जतरा आपण को नोट्स डिक्टेट करा होची, ट्राई टू राइट इट फास्ट. गोटे टॉपिक सरी गला, टेंपल आर्किटेक्चर सरी गला, try to think कि ए टॉपिक टा को म केमिति प्रेजेंट करि परिबी कम टाइम रे, what diagram can I draw. डायग्राम टा एते थरा प्रैक्टिस करंतु कि सेठी आपण नगर स्टाइल आसी संगे संगे आपण 2 मिनिट 3 मिनिट रे करि देबे. सेमते कि एटा हे गला. देन एनालिटिकल स्किल्स एग्जाम रे बहुत दरकार. सो हमें प्रतिदिन पढु जे, बट हाउ टू रिलेट, काली जहां पढिथिले आज तार डेवलपमेंट टा कोन होची, how to relate and how to find out ki कोटा relevant information which will be helpful for me in examination. That skill also you need to develop. Then interview, when you go to interview,
how you present yourself there, apne kemiti communication କରୁଛନ୍ତି सेठी, how you present your view, that is also important. And ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଏବେଠୁ ତାକୁ develop କରି ପାରିବେ. You have got this opportunity classroom ରେ ଅଛନ୍ତି, ask questions, ask doubt in the language in which you will be giving your interview, ओडिया हो कि हिंदी इंग्लिश हो, जो थे आपण देबे, start asking questions. I'm pretty sure faculties माने एते आपण को approachable थिबे that if you start and ask question, first of all it will develop your confidence. Second of all, you're having a good communication skill. If you're interacting with your faculty, that language, the way of talking, that you will develop naturally. So all this na, etu jodi gotte barsha apne pura deiki prepare karibe, there is nothing in this world jota apanku lagibo ki, you know, that can stop you. So when I started preparation, to be honest, mu focus OPSC upar adhika karthili and UPSC upar ate kari par nathili because of my time management. Again, time management is also a skill. We are all youth, हम पाखरे बहुत किछि अछि करिया पई. We also want to go out, टिके केतले बुलिया पई, hang out करिया पई. We have many things to, you know, we can spend our time. But where to use our time, कोठी utilize करिवार अछि, that is also very essential. Because when you get into the service, माने मु एबे just right after this मु अनुगुल को जाउछि, मोर सेठी election attachment अछि. So how to manage time in your life after you come into this field, that is also very important. सेटा भी अपने preparation time रे ही सिखिबे, को subject ता केते परिवार अछि, केते important दबार अछि, that will come through naturally. And आउ किछि some basics जेमति कि अछि कि हाँ, answer writing practice, that should ideally आपण start करिबा कथा once your syllabus is over. जदि जानि नांती ताले केमति लिखिबे, once थोरे आपनकर हेई गला से टॉपिक ता कि से सब्जेक्ट ता, तापरे you can start answer writing. But जेमति कि आज जदि आज कोन टॉपिक पढाइतला कि हमको आज जदि इकोनॉमिक्स रे कि कोन पढाइतला, ऑल राइट. सो कोन पढाया, all right, so that is, I think the Palampur story is a basic introduction to you just to build your interest towards it. So once gote topic gote GDP upare gote topic ta pura clear हेई गला, materials रे भी questions अछि, बाकी online ने भी available अछि some of the questions कि आपण previous year questions भी देखि परिबे जहा available अछि, and start writing it. निजे लिखिबा स्टार्ट कर दियंतु, आपण पढी देइ छथि किछि तो माइंड रे रजिस्टर थिबो, जते टाइम लागुची फर्स्ट क्वेश्चंस इनिशियली इट विल टेक यू लॉट ऑफ टाइम, घंटे 1.5 घंटे लागि पारे, बट धीरे धीरे एटा कमिबो. if people are clearing this examination, they are definitely writing the answers. So धीरे धीरे टाइम टा कमिबो, बट एटा कहबे कि वेट करनी कि माने पूरा सरी गले सब सरी गले म आंसर लिखिबी गोटे शुभ मुहूर्त बाहर करी कि नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट. जस्ट स्टार्ट राइटिंग, माने लिखंतु and evaluate bhi karantu. You guys have a very good faculty. I personally have been here for my OCS ra mains answer likhiba pai. I have been here, and for interview also apane mane dekhithe, we have taken a mock interview here. So very good faculty achanti. So mane jette apana jodi paisa deichanti and time deichanti, jette apana utilize kari paribe. Doubt pacharatu, website re bhi achi, right, jaha question likhibo tar answer likhi pathibo taku copy cheki, right. Right. And since it is a long process, gote motivation factor gote rahi jaye, where to get motivation from. First of all, we are all unemployed first of all right now, samaste prepare karuchu, so that should be the biggest motivation ki kichi nijo pai karibar achi. This is a very good career option. This is not a job actually. This name is a civil service, and apna he gala pare you will get to know what this job offers. This is a platform where अपन बहुत किसी चीज जानी परिबे, and nobody will be there to, you know, be a hindrance to you. Just आपनकर idea थिबो, you will have a lot of support from the whole organization. किछि बड़ धरणर चेंज आनिया को पाउथिबे from the grassroots. You will be given, we have ample of opportunities. So first of all, this career is very good. Second of all, motivation is that we all have our own motivation. माने everybody अपन समस्तंकर story different थिबो, why you are here, why this examination. Say why factor टा को बहुत बड़ा बने दियंतु कि even if when you are very motivated कि marks भलो आसुनी कि पढ़िया को इच्छा होनी, but सेइटा recollect करी कि ना माने पुणी टेबल ऊपर बसिया पे माने इच्छा टा आसुथिबो. Say why factor टा को बहुत माने important दियंतु.
थर्ड ऑफ ऑल गोटे कथा अछि कि जते आपण डिसिप्लिन हे जानती मोटिवेशन डजंट मैटर सो वंस देयर इज अ सेइंग दैट डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन सो वंस आपनकर गोटे हैबिट हे गलानी कि हम मते सकाळे 8 रे उठिबार अछि न्यूज़पेपर पढिबार अछि तापर ब्रेकफास्ट करिके मते एजीएस रही पोर्शनटा पढिबार अछि क्लास जिबार अछि देन इवनिंग को मते 5 एमसीक्यू सॉल्व करिबार अछि 2-3 मेंस क्वेश्चंस लिखिबार अछि एंड मते गोटे टॉपिक ऊपर लेट्स से मो फादर को सहित से विषय डिस्कस करिबी दैट इज अ वेरी गुड आइडिया टॉक टू योर फादर पेरेंट्स आर वेरी नॉलेजेबल तांको सहित कथा होंतु आई यूज्ड टू टॉक टू माय पेरेंट्स रिगार्डिंग जीएसटी कि जहां भी हे गला ओडिसा रे पॉलिटिकल सिचुएशन आल्सो सो एटा गोटे आपनकर शेड्यूल हे गला कि प्रति वीकली मु ताको रिवाइज करिबी एवरी सैटरडे संडे आई विल सिट डाउन आई विल रिवाइज कोन कोन पढुतली कि if you have a habit of this na after 20-21 days आपनको मोटिवेशन दरकार नहीं you will enjoy that process भल लागिबो निजे नोट्स करिया को अंडरलाइन करिकी हाइलाइट करिया को भल लागिबो when you see your notes ना जता अपन पेन पेपर रे नोट्स करछथि कि एवर नोट एनी काइंड ऑफ नोट्स अपन करछथि you feel proud of yourself कि अच्छा एते सिलेबस गुरा म कवर करि सार लेनी I have made them into notes आउ केते बाकी रहला that's it so you will माने every day by day आपनकर गोटे प्रोग्रेस देखिले you will feel good about yourself and you'll be also motivated self motivation is the key initially you need an external motivation to say कि you can do it कर परिबो तम द्वारा हबो and all that but at the end it's you how you take it बाकी एटा हे गला तापरे yeah I'll just say कि माने giving my personal example एते जिंस अछि पढिबा पई it gets very difficult to cover all the topics also वर्ष भितरे so but exam रे जतले मार्क्स आसीबो the marks will clearly reflect आपण कोठी केते आपण परिश्रम करछथि को पेपर आपण टाइम देछथि सेही पेपर अधिक मार्क्स निश्चय आसीबो जोठी मार्क्स जोठी आपण देई नांती एते परिश्रम करनांती मार्क्स कमी जिवो so I have felt this both of my exams I have felt it so for example essay I do not have a strategy for essay मो essay रे मु किछ पढि के जाय नथि I just went through past year questions and तार गोटे छोटा मोटा एमती फॉर्मेट करके पढि जायतिली and my marks in essays are disastrous एठी मु कहबी परिबिनी and that is one of the reasons that probably this rank anyway so but सेही भले फोकस ता मु सेमती मोर ऑप्शनल ले करितली बिकॉज़ आई हैड अ वेरी गुड बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स पढी के आस्तिली 5 वर्ष प्लस ताको ओपीएससी रे भी मु ताको मेंस रे रखि ऑप्शनल रखितली बट सेही फोकस ता ऑप्शनल अधिका करितली बेली आई हैव वन ऑफ द सेकंड हाईएस्ट ऑप्शनल मार्क्स इन द होल बैच ऑफ माय यूपीएससी एंड दैट इज वन ऑफ द पॉजिटिव रीजंस आल्सो सो माने वीक एमती में कि जोटा आपन को वीक पॉइंट ना सेटा को पूरा छाडी देबेनी ट्राई टू बिकम एवरेज इन दैट let's say for example ethics सेटा नुआ इंट्रोड्यूस हेजी I was going through that paper कली ethics रे टिके ट्विस्ट क्वेश्चंस आसुची माने खाली ताको पढी देई कि अप्लाई करि हबनी बट एमती नुए कि से सब्जेक्ट रो डरिवार अछि कि पूरा ताको लास्ट रे करिवार अछि नॉट एट ऑल ethics रो लो हैंगिंग फ्रूट्स ताको देखंतु व्हाट कैन इट बी फॉर एग्जांपल केस स्टडीज रो अप्रोच ता पूरा सिंपल बट इंट्रोडक्शन लिखिबार अछि हु आर द स्टेक होल्डर्स को डिसीजन ता हमें नबा कोन बेनिफिट्स हबो कोन चैलेंजेस हबो सिंपल एंड से केस स्टडीज गुड आई थिंक अराउंड 20 मार्क्स 15 की 20 मार्क्स आसे तो वेरी स्कोरिंग आल्सो सो फर्स्ट एथिक्स आपन को केस स्टडीज करिवार अछि देन यू कैन गो टू द थ्योरी पार्ट ए पोर्शंस बट पार्ट ए पोर्शंस रे भी डेफिनेशंस गुड पूरा थरो होबार अछि honesty integrity what is the difference what example can you give from your personal life what example can you give from the surrounding कोन करंट अफेयर्स रे चली छी one quote माने bare minimum जति कि हेई परिबो से जाय जानतु पूरा छाडीबार नै एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स को माने किछि माने वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूरा छाडीबार नै मु भी पूरा छाड नथली जति कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स अछि सति कि करि के जायथिली सेमति कि then the things comes now that you are preparing एबे स्टार्ट करछथि after some months आपन को दरकार पड़िबा कि नोट्स भी बहुत बल्कि हे जाउची so you have to also focus on note making also is an art को सब्जेक्ट रो नोट मेकिंग करिवार अछि दैट विल कम टू यू फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम रो मु सब करि नथली नोट्स बट ओनली दोस टॉपिक्स जोडा मते लागुतला कि बहुत रिपीटेटिव अछि कि बहुत माने तो मन रखिबा को डिफिकल्ट होची फॉर एग्जांपल देयर इज अ सोशल एंड ट्राइबल मूवमेंट तार गोटे मु टेबल कर देथली लक्ष्मीकांत रो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर्स जदि आपण देखिबे देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टैट्यूटरी बॉडीज तो तार गोटे टेबल करी कि कंपोजिशंस कोन केते तांकर एज क्वालिफिकेशंस कोन तांकर प्रोफाइल ता कोन सेटा गोटे टेबल कर देथिले इट गेट्स वेरी इजी
to revise before prelims. Again, this is a very personalized strategy. जोटा मते difficult लागितला सेटा आपन को difficult लागिबो सेतर किछ माने नै. It might be different for you, but notes को केमिति consolidate करिवार अछि, short notes गुडा केमिति रखिबार अछि मन, that you have to develop धीरे धीरे करिवार अछि. But it might seem difficult, but once upon a process रे पळे आसंदी ना, you are surrounded by this, you're surrounded by news. अपने YouTube खोलले भी आपन को सेही आसीबो daily news analysis, MCQs. अपन माने Gmail खोलिले भी you will be having these messages from institute कि these are the questions to be done. So once you are surrounded by this process ना, तो धीरे धीरे बहुत easy हो जाए. माने अपन सेही जिंसटा को सार्क बिमस्टेक बिसरा अपन everyday सुनुछंती. So धीरे धीरे इटा mind रे register हो जाए. Having said that, having a good memory is also very essential for this examination. मु जहाँ last year पढ़िथिली, I barely remember this. बट एति की मेमोरी रहबा कथा कि 1 ईयर जाय एटा को चले देबो कारण आपन को एग्जाम लिखि माने क्लियर एमसीक्यू भी करिवार अछि एंड ताको लेखिबार भी अछि कॉम्प्रिहेंशन से. सो एंड हाउ टू डेवलप दैट मेमोरी, इफ आई कुड डू दैट देन प्लीज ट्रस्ट मी दैट एवरी वन ऑफ यू कैन डू दैट. माने गोटे टैक्टिक्स थाए, या तो आपण पढ़ी पढ़ी मन रखिबे, या फिर पढ़िला बेले आपण टिके टिके स्क्रिबल करी कि नोट्स करि दोथिबे. जेमति कि आर्ट एंड कल्चर रे आपण नेमोनिक्स टेक्निक अछि से थ्रू भी मन रखि परिबे, और यू डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, दैट इज आल्सो टेक्निक. यू सो हाउ टू से टेक्निक टा भी आपण को डेवलप करिया को पड़िबो कि हाउ टू रिमेंबर द फैक्ट्स. एंड दीस आर द आई थिंक या टेस्ट सीरीज. सो टेस्ट सीरीज नेवरदलेस टू से केबे भी भाबंतनी कि मु जाई कि सेही ही एग्जाम टा लिखिबी फर्स्ट हबो ना. द मोर यू प्रैक्टिस से हाथटा सेठी सेमती चलिबो, that will be confident. So it is all about practice. See, मु आज एठी छिड़ाई कि जति कि कम nervously कहूची, probably the first time I was speaking I was very nervous. So this also comes through practice, right? So test series, dedicated test series था, like before prelims. जदि prelims होची हमरो May June रे, तारे February रो हमको पूरा focus करिया को पड़िबो prelims oriented. आउ किछि पढ़िबार नाही नाही मते एडिटोरियल भी आपण छाडी परिबे सेते बेले, बाकी मेंस भी आपण छाडी परिबे, बट डेडिकेटली पूरा प्रीलिम्स पई कोन फैक्ट्स को फिगर्स मन रखिबा को छे, यू शुड बी डेडिकेटली फोकसिंग ऑन दैट. टेस्ट सीरीज रा इंपोर्टेंस ता दी तरह माने टू वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सब टेस्ट एमती हेई थाए कि फर्स्ट टेस्ट नंबर 1 इज वेरी इजी, टेस्ट नंबर 2 टिकट टफ हेतिबो, 3 टिकट टफ हेतिबो, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल. फर्स्ट ऑफ ऑल you will get to know कि आपनकर मार्क्स कैसे आसुची. सो मानकर गोटे टॉपिक रे भलो मार्क आसुनी, तो you get to know कि अच्छा एटा मोर वीक पॉइंट अछि, I have to go back to my basics, I have to go back to my notes and I have to revise it. First of all एटा तो हेगला. Second of all टेस्ट सीरीज रो आपण जाने को पांती कि how to have intellectual guesses, because समस्त को 100 out of 100 questions we cannot माने 50 टा करिया भी is very difficult. 40 टा खंडे हमको पूरा श्योर शॉट आस्ता है, तापरे वी हैव टू मेक गेसेस कि अच्छा हां ए चारटा ऑप्शन भितरु ए दिटा तो हेई परिबनी, सो आई हैव अ 50-50 रेशियो इन दिस टू ऑप्शंस, सो कोटा अटेम्प्ट करिबी. सो दैट से इंटेलेक्चुअल गेसिंग पावर टा जते हमें टेस्ट टा दो, दैट कम्स थ्रू इट. एंड अपन जदी को भी एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट रा अपन कोचिंग फॉलो करछंती, टेस्ट सीरीज फॉलो करछंती, सो दे हैव अराउंड 30-40 टेस्ट आई थिंक. हाँ, alright, let's take an average 50 tests aschi. So each test will have around 100 questions. So you have around 4000 to 5000 questions जोटा अपना practice करी की जाउछंती आगुरु एग्जाम हॉल रे बसिया परबुनु, you are already practicing so many questions. So आपन को से fear ता न थाए. एंड केमिति भी टेस्ट गुडा केमिति देबे पूरा सेही बडा एनवायरनमेंट रे दियंतु जो बेले आपनकर हेबागु जाउथिबो एग्जाम टा, बिना फैन रे बसंतु. मोस्ट ऑफ द सेंटर्स डोंट हैव फैंस. बिना फैन रे बसंतु, 3 घंटा मतलब 2 घंटा रा टाइम लिमिट ता दियंतु, एंड ओएमआर शीट रे करंतु, बिकॉज़ सेही राउंड टा करिबार एंड टिक करिबा इज आल्सो डिफरेंट. केते बेले जल्दी जल्दी रे एग्जाम हॉल रे हमको बी मार्क करिबार था एंड वी मार्क इट सी और डी, सो दैट गोज इनटू नेगेटिव मार्किंग. सो एटा भी सही प्रैक्टिस. तो एमती कले ना आपन को डर लागिबनी जते आपन जिबे एग्जाम टा दबा को, यू वोंट बी frightened कि अच्छा आई एम सीइंग अ पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम और एन ओएमआर शीट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो हैविंग सेड दैट, इटा तो प्रीलिम्स रे हेगला. सेक्शनल टेस्ट अछि माने फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेस्ट सीरीज रो फर्स्ट सूत्र आपन हवा कथा कि आपन पीवाईक्यूज पूरा थरो होई जंतु. पीवाईक्यूज को थरे करिवार नै, बारंबार करिवार अछि. एंड मु बस मटेरियल देखुतली, से माने भी सॉल्व्ड पीआईक्यूज भी देइ छंती. सो आपन को आ देखिया को पड़िबनी कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर एंड ऑल दैट, यू डोंट हैव टू गो थ्रू इट.
ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରିଲିମ୍ସ। मेन्स ପାଇଁ ବି as I said ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟପିକ ସରିଗଲା ମାନେ start writing answers ଯେତେ ଖରାପ ହେଇଥାଉ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ faculty କୁ ଦେଖେଇବେନି but get it peer reviewed among yourselves but once you start writing ନା ଗୋଟେ habit ହେଇଯାଏ इनफैक्ट ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇ ଆସିବ and once prelims ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିଗଲେ you get 2-3 dedicated months for mains as many as papers you can write बस आउ देखिबार नहीं हातर देखिबार नहीं हाथ बिंदुची टाइम होची किछि नहीं जत्ते आपण लिखि परिबे बिकॉज इन एग्जाम ना गोटे आम क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी गोटे आसी जाए गोटे बिकॉज क्वेश्चन एते गुडा थाए सो सब क्वेश्चन टाको आमे केते भलो कि क्वालिटी रे आंसर करूछु कि आमे सब जंका पेपर पूरा पेपर टाको कंप्लीट करूछु राइट एडिक्वेट इंफॉर्मेशन सेटा गोटे डिबेट आसी जाए दैट यू विल गेट टू नो कि व्हेन यू राइट द पेपर्स बिकॉज यदि एमती होथबो कि 20 क्वेश्चंस रो यू जस्ट राइट 15-16 बहुत भलो आंसर लिखि थांतु बचे बट 4-5टा क्वेश्चन छाडी के आछंती तो एग्जामिनर माइंड रे एटा आसीबो कि तो गोटे पेपर टा भी कंप्लीट कर परलानी सो हाउ डू यू थिंक यू विल बी एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड आल्सो ब्लैंक पेजेस देखिले दैट आल्सो गिव्स अ वेरी नेगेटिव कनोटेशन कि आपण पूरा पेपर ओटा ब्लैंक थिबो जतेले सो दैट गिव्स अ नेगेटिव इंप्रेशन सो आई पर्सनली मु तो सब क्वेश्चंस करके आसे चेष्टा करे लास्ट को गोटे दिरा क्वेश्चन बहुत खराब लिखे बट आई राइट इट किछि न हले किछि नाही खाली छाडीबार नाही पेपर को किछि न हले खाली डेफिनेशन ता गोटे कंक्लूजन लिखिबार अछि सो दिस विल कम ओनली विथ प्रैक्टिस again this is a skill how to write answers fast these are the things जोटा मु कहया को चाहतली बाकी if anything is required पचरे कोन अछि पचरे it's a very thing so, how to add up the current affairs with the relative questions. Like suppose the questions comes on Israel-Iran in international relations and question comes, and how to add up the facts that related to current affairs with that question. Because question will be not related to directly current affairs. It will be like theory based on something like that. right. Very good question. इटा मु कवर भी करना थी सो फर्स्ट ऑफ ऑल इजराइल ईरान आपण कहले ना दैट विल बी कवर्ड इन क्लास सी आपण को गोटे बेसिक थ्योरीटा देई देबे हाउ द हिस्ट्री हैज बीन विथ इजराइल ईरान तांकर कोनटा रहिची व्हाट आर द पॉइंट्स कंटेंशियस पॉइंट्स आपण को देई देबे सो आपण को पकरे गोटे बेसिक जिंसटा रहि गला नाउ टू ऐड ऑन ए न्यूज़ टा 3 मास 4 मास लानी कांस्टेंटली आसी चलीची सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण कोन कर परिबे जेतला आपण एडिटोरियल्स पढुछंती एनी ऑफ द गुड लाइंस आपण को पसंद हला सटू कोट्स कि किछि जजमेंट्स कि किछि डेटा पसंद आसिला तो सेही नोटबुक रो सेही लिखि दियंतु व्हेनेवर यू प्रिपेयर नोट्स दिस इज आल्सो वेरी पर्सनलाइज्ड आपण टिके जागा छाडी परिबे राइट हैंड साइड रे कि आपण स्टिकी नोट्स यूज करि परिबे कि एनी ऑफ द रफ लूज शीट करके रखि परिबे किछि भी एक्स्ट्रा डेटा लागुची जोटा कि इट इज वेरी इंपोर्टेंट सब आपण सेही लिखि कि ताको सेही चिपके दियंतु सो द नेक्स्ट टाइम यू स्टडी यू कैन रिवाइज इट एंड एडिटोरियल्स रो काम ही एटा कि आपण को सेटो ब्राउनी पॉइंट्स मिलिबो माने सेही जिंस गुडा सब आडे अवेलेबल अथाय जो एते माने दे राइट एडिटोरियल्स दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड सो दे नो देयर फील्ड वेरी वेल सो एडिटोरियल्स को आपण सेही पॉइंट्स कलेक्ट करबा हिसाब रे पढंतु डू नॉट रीड इट लाइक अ स्टोरी और डू नॉट इवन इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द एडिटोरियल ना कोन कहिया को जांची कोन नै ठीक अछि यू माइट अंडरस्टैंड 40-50% ऑफ इट ता भीतर जोटा आपन को इंपोर्टेंट लागिला ना सेटा लिखि के रखि दियंतु गोटे जगह रे व्हिच यू कैन यूज इट इफ यू आर जस्ट रीडिंग इट एंड यू आर थ्रोइंग अवे द न्यूज़पेपर दैट मेक्स नो सेंस 3 दिन तले कोन न्यूज़पेपर लिखा हितला नोबडी ऑफ अस रिमेंबर्स राइट सो एटा कर परिबे एंड एड ऑन्स करिवा पई वैल्यू एडेड मटेरियल्स बहुत मिलुची मार्केट रे so any of the topics I do not know if APTI PLUS has such value added material so acha so okay so right so सेही मैगजीन्स रो भी आपन को पॉइंट्स मिल जिवो कोन कोन करिवार अछि यूटिलाइज करिवार अछि दैट यू कैन राइट बाकी टुवर्ड्स मेंस ता पूर्व डेडिकेटेडली भी बाहरे मेंस कंपाइलेशंस भी बाहरे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंपाइलेशंस भी बाहरे ता धुरो भी आपन को पॉइंट्स पळे आसीबो कोंटा कोंटा लिखिवार अछि Any more doubt? Another personalized doubt that at the starting of the day I make a to-do list like which topic I have to finish. But at the end of the day, the majority of the topics is incompleted. So the time management, like reading and understanding the concept
all right, economic strategy. So see, time management is tough first of all. So rather than if you feel ki jadi per day apna to do list ta kari parunanti, so what you can have a weekly approach to it ki ei week re mate ei broad topics cover karibar achi, so that can give you a benefit. But it is a very good thing that apna karuchandi, you're starting your day as a with a planning ki mate eguda cover kariya achi. Even if 100% complete honi, I'm pretty sure ki 80 to 90% ta complete houthibo. So on a starting it is a very good percentage धीरे धीरे, because आपण सब टॉपिक है ना फर्स्ट टाइम पढुछंती, so it will take time to register ताकू मने रखी माने बुझिबा को मने रखिया को टाइम लागिबो. But once you are through it ना रिवीजन करबा और मने रखिया बहुत जल्दी जल्दी हे जिवो. वी जितकी जण भी समस्त क्लियर करिसंती कि एग्जाम लिखिथिबे, दे ऑल नो कि पेपर 1 आउट 2 भितरे 2 घंटा मिले in mains 2 घंटा मिले. But we are so much thorough with those topics कि से 2 घंटा रे भी हमें रिवाइज कर दो. We just skim through it and we know कि ए पेपर रे कोन लिखाई छै, ए जगह रे कोन लिखाई छै. This is important. हमरा माइंड धीरे धीरे एते थरा पढिला परे ये बस रजिस्टर कर दे which is important, which is not, how to go through it हे जाय. Time management, for example आज the economics हला, so you can take up another topic also. माने एमती per day कि at a time दीटा रो अधिका सब्जेक्ट नियंतुनी, ठीक अछि. सो इफ यू आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स इन क्लास, व्हाट यू कैन डू इज कि घरे जाय कि सही इकोनॉमिक्स तक रिवाइज कर दियंतु एंड पिक अप ए न्यू टॉपिक जोड आपन को भल लागुची, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री. स्टार्ट रीडिंग ऑन योर ओन. माने सब किछि त एवरीथिंग कैन नॉट बी आल्सो कवर्ड इन क्लास. सेल्फ स्टडी इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट. जदि आपन फर्स्ट रो किछि पढी दोछंती, माने को लेट्स से कि नेशनलिस्ट मूवमेंट आपन को भल लागुची, तो सेही जगहटा जदि आपन के आगुरो पढी दोछंती एंड व्हेन इट इज डिस्कस्ड इन क्लास, it will be easy for you to record in your mind also. So have two subjects with you jota apna simultaneous karibe, 2 subjects plus newspapers plus if you are following any monthly magazines also he jibo. How fast in the understanding skill? It will come with time. धीरे धीरे फर्स्ट टाइम जतले मु भी सार्क विषय पढी थी, मु किछि जान नथिली, बट धीरे धीरे पढला परे यू नो कि अच्छा ठीक अछि एटा पढी छि मु, आई डू नॉट हैव टू गो थ्रू इट. It will come with time. In fact, as you give more and more time to this examination process na, you will see कि तमरो reading part भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ी जिवो, which is also very essential in our service. Like इत्ते mails, इत्ते letters आसुची to a collector's desk. I was just seeing my collector sir. So say इत्ते जल्दी जल्दी पढ़ी कि ताकू quick decision नबा कौन ताकू how to put up it. That also that is a skill that will come through this examination only. So never think कि ये जो examination process टा अच्छी है, rigorous अच्छी कि redundant अच्छी कि एमिति माने एई भा technology time रे हमें paper pen and paper रे लिखुचु, theory लिखुचु, nothing at all. They have this examination pattern to prepare you to be an administrator. So इटा को पूरा माने internalize करी दियंतु, have माने एई process टा ऊपर पूरा belief रखंतु and जहाँ जो whatever is required according to the modes of examination, follow it. Second is economic strategy पढ़ाइतले. It is regarding GS or optional? GS, right? Economics is a tricky subject. So NCERTs एते help करिवनी economics रे, because से माने NCERTs of 11th and 12th might be helpful, but ता पूर्वरु they are just basics. जेमति कि से बड़ा questions आजिकली पचारनांती. But if you compare, if you are studying only for OPSC, ताले तांकर एग्जामिनेशन करा क्वेश्चंस ता टिके बेसिक थाए, माने थियोरेटिकल थाए, which you can get it covered through any of the textbooks. और हम गोटे बुक फॉलो करू ना, गोटे नहीं गोटे जीएस बुक गोटे फॉलो करू. ओके, सो गोटे जीएस बुक गोटे कंपाइलेशन करी कि गोटे मिले, इफ आई एम फॉरगेटिंग द नेम, सेथरे माने सब हिस्ट्री ज्योग्राफी सब थाए. Right. So any of the books अपना follow कर परिवे and try to watch videos. जत्ते माने किसी topic बुझी आसनी, foreign direct investment, FII रो difference टा बुझी आसनी. It is also very difficult to understand in class also. So it is टिके अपन को निज्जु को टिके time देवा को पड़ियो. जत्ते videos देखंतु, what is happening, ask questions. And economics रे भी बहुत भला भला lectures माने भी अचंती. For example, मृणाल अचंती, an academy रे. So if you think that is completely माने पूरा बुझा आसनी, you can also look at those videos. जोटा अपन को जोटी wherever you get your doubts cleared from, that should be the
माने दैट शुड बी द एंड गोल माने इत्ती की हमर नॉलेज इत्ती की जिंस हमको पढिवार अछि सोर्सेस कैन बी डिफरेंट को some of the coaching institutes are very good sources for example their material in previous year questions that is very good but economics you might like it from somewhere else so go through it no hard and fast rule ki mane right I am not the correct person to be saying about essay. So, We have the class. essay, please refer to other strategies. मोबाइल एप्लीकेशन हम सिना में नुआ जॉइन करछ तमर क्लास के सब रेकॉर्डिंग हाँ सही से जो पढ़ाई है केमती इंट्रोडक्शन लिखिबा केमती मेन बॉडी लिखिबा केमती कंक्लूड करिबा सिनोप्सिस केमती आगो माने रफ वर्क करिबा सब से इतिर अछि रेकॉर्डिंग जो अछि तुम जदि एडवांस पढ़े चाहछ रेकॉर्डिंग क्लास देखो पूरा वर्षन रेकॉर्डिंग क्लास भी अछि हमर जो क्लास है एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन सो एसे रे एमती थाई कि आजकल तो से माने पूरा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स ऊपर पचारछंदी सो वन थिंग इन एसे हेल्प्स जदि आपण बहुत फिक्शन पढुछंदी कि माने यू हैव एन हैबिट ऑफ रीडिंग ना ताले दैट normally helps in writing something because essay it is not like GS आपण खाली लिखिबार नाही you have to also build a माने बीटा पैराग्राफ भितरे you have to write a good line joining line so you have to give a good anecdote conclusion टा भी बोल रहबा कथा so anyway who is good in creative writing ना you have an edge in essay but that doesn't mean कि हमको ऐसा बहुत खराब करिवार अछि हमको एवरेज आनिवार अछि सेतरे so for that you can read upon quotes किछ बोला बोला quotes पढंतु and how to use that quote गोटे quote टाको पढिले तार किछ dimensions किछ create करिया को भाबंतु read the previous year toppers तांकर essay माने केमिति जाउछंदी that can be a starting point so all this can be done in essay and start writing essay माने एबे तो start हिजी मु जस्ट काली ही देखुतली 2022 रो ओएस रो क्वेश्चन टा देखुतली दे स्टिल हैव द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस माने एते भी डिफिकल्ट नहीं दे आर आस्किंग अबाउट एनवायरनमेंट एजुकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाँ women empowerment so एगुडा माने खाली टॉपिक रा ताको स्ट्रक्चर टा बदले दिछंदी बट दिस इज द थीम so you can ए भले जो सब थीम अछि some 10 12 very dynamic not dynamic very important themes you can start writing एबे ठरुई so for आज लेखंतु भल लागिबनी आउ दिटा वीक पर आउ किछि नुवा एडिशन करी के लेखंतु it will come through if not ताले आउ को सब्जेक्ट रे बहुत भल मार्क ने आसंतु that will you know do away with this course so so first be clear कि आपन पाखरे गोटे दिन रे केते टाइम अछि एंड केते टाइम आपन को पढिवार अछि not possible कि आपन 15 आवर्स अधिका पढि परिबे even 10 आवर्स ऊपर पढिया भी डिफिकल्ट so be पूरा एटा क्लियर हो जंतु केते रु केते घंटा मते पढिवार अछि तापरे एनी टू टॉपिक्स आपन उठांतु टू सब्जेक्ट्स जहा गोटे क्लासरूम रे चलछि ताको पैरेलली पढंतु आ गोटे एनी ऑफ योर इंटरेस्ट टॉपिक्स तापरे start practicing MCQs also basic MCQs not up to the question जेमति एग्जाम लेवल लो नुए बट जहाँ एठी मटेरियल्स किया होची कि जहाँ वेबसाइट रे मिलुथिबो start practicing those MCQs that will be किछि हे गले 3-4 मास हे गला परे once you are thorough with this topics start writing answers also तीन को 3-4 आंसर्स लिखंतु it might seem a huge task but धीरे धीरे ना incrementally हे जिवो you think about it ना you have 1 year now to prepare now in the examination process also 3-4 मास मिलिबो it's not like only 1 year so you have around 1.5 whole year to माने fully focus in this examination so it will come through CSAT in UPSC CSAT is getting very tougher very tough in fact the reason that this time ethre jodi apna cut off dekhithibe 2023 ro cut off UPSC ro it has drastically come down and one of the reason is CSAT so first of all those who are not from engineering background for me we have to practice a lot in CSAT the starting point will be previous year questions jette barsa re eichi taku uthantu 2014 ru and देखो start practicing माने किछि पढिबार नै आगे क्वेश्चन सॉल्व करिक देखंतु क्वेश्चन होउची कि नै
So you will first get to know कि आपनकर base level टा माने how is your basic understanding, and then you will start improving on it. तापरे CSAT रो English comprehensions, again that is अपन जितने पढ़िबे you will get to know कि how to इतने बड़ा बड़ा paragraph जो था UPSC रो how to cover it फटाफट time रे केमती cover करिवे, that will come through it only when you read a lot, and that will come naturally. अपन इतने material पढ़िबे इतने newspaper पढ़िबे you will get to know धीरे धीरे that will come. English comprehensions पाई you do not have to worry. What you have to worry is the LR and maths portion. तापाई I think CSAT रो classes भी होतिबो, so exactly CSAT रो classes को follow करंतु जो topics टा आपन को tough लागुची time and work permutation combinations tough लागुची ताटो टिके extra करंतु go to any RS Agrawal book तार रो practice कर दियंतु कि YouTube रे बस लगे दियंतु permutation combinations CSAT UPSC lot of videos will come, see that, try to solve it, जितने practice कर परिबे. If CSAT is your weak point, start practicing as early as possible. If you think you are in a range जेमति कि 90 100 आसी जाउची to previous year questions, then ठीक अछि exam रो से जो February रो आपण जतले prepare करिवे prelims ପାଇଁ, there you can fully focus on that and you utilize this time for your optional, for your GS essay, ठीक अछि. So first you get to know your level कि level टा केते अछि, तापरे you can improve upon it through classrooms and extra materials. Follow monthly compilation instead of monthly compilation, because we are reading daily newspaper. So when we get monthly compilation, we get it in the next month. So we get added work because we have to read newspaper along with the monthly compilation. So that's what I was wanting to ask. That is it good if we follow the reading 365 or mains 365 instead of the monthly compilation? See, mains 365 तो आपको follow करना ही है, ठीक है. आप कुछ भी कर लो, mains 365 you have to follow, but you have to follow it when after you have cleared the prelims, you have 2-3 months, that is like a value added material. समस्त पढुछंदी across India, so आपण सेटा पढिया को ही पड़िबो. But coming to the monthly current affairs magazine, that is I personally followed the monthly magazines. माने एमति ना कि किछि सही टॉपिक्स गुडा प्रति मास रे रिपीट ही चलुथिबो. So once you read it for 2-3 times, सेटा that gets registered. But if you feel like you also have to know कि current affairs रे केते पढिवार अछि. That is such a dynamic topic. पूरा टाइम जदी हमन current affairs से देई दबा, so जोथरे हमर पूरा हमर जो probability अछि अधिका, like the static portion, that will be neglected. So if you feel कि current affairs magazine बहुत time नउची, then you can follow the monthly magazines, the yearly compilations towards the end. But if you are doing that, then do not forget newspapers पढिवार ही अछि, so that एमिति न लागो पूरा 1 year परे कि ए term ता मु totally तो सुनी ही नथिली. So पूरा जदी नुआ लागिबो 3 मास 4 मास एग्जाम रो पूर्व जदी पूरा completely new लागिबो, so you will also have that fear. So just to avoid that fear, I had followed monthly magazines so that at least I am aware of the terms. माने मुंडरे बाजीची, माने I know the terms so that I can, you know, माने डर लागिबोनी. So this is your call now. If we even follow the monthly magazine, then how do we follow it with the newspaper? Newspaper should not take you more than 40 minutes. जदि आपको 40 मिनट रो अधिका लागुची न्यूज़पेपर पढिया को ताले you are giving a lot of importance and time to your newspaper, which is not required. Newspaper first newspaper अपना first page टा देखि दियंतु, you will get to know what are the importance. तापर directly go to the editorials. Editorials से भी अपना scheme out कर दियंतु. If it is an editorial about politics or sports, not required. If it is about a scheme, go through it. If it is continuously coming about the world politics, सब दिन आसुची ताले ठीक अछि, आज I can skip it. तापरे go to the आउ गोटे explained section असे Indian Express रे, then go to that. So you should know कि को topics पढिवार अछि, कोटा बिल्कुल छाडिवार अछि. Regional news पढिवार नाही. Even OPSC ପାଇଁ भी regional political news पढिवार नाही. They do not ask कि कोन कोठी हेछि को district रे. So newspaper should not take you more than 40 minutes. 40 minutes is the max. Newspaper केबे छाडिबे नै भी एमति भाबंतनी कि आजि पढिबे नै, काली दीटा को newspaper पढि देबे. It never happens. It feels very lazy. दीटा बल्कि newspaper पढिया पई newspaper छाडिबे नै. And monthly magazine, once you get it ना, माने पूरा monthly magazine टा around 100 pages रा आस्तुवा बोधे. 190 is a lot actually. magazine का लगे अच्छी Sometimes 60, sometimes 100 pages, sometimes 200. So first magazine टा को भी गोटे मंथ रे दीटा रीड करिवार अछि. First give a quick read.
quickly dekhi diya ki koda important and try to underline it, because they have also written it in a paragraph way. When you firstly you read it quickly, underline it, and the second reading also you have to do it in that same month. Second reading re khali sei guda pora jo guda apna underline karchandi, thik achi. So in 1 month 2 times read is possible, trust me. The OS ପାଇଁ କେବଳ ଖାଲି OS related ସେ ଜିନିଷ OS Any more doubt? ଆପଣ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? So OS pai I think it is a very good thing that mu it first time dekhuchi actually. I personally did not follow this OS gadget. I think it angara no aschandi, but it is a very good thing ki samane last ko MCQs bhi dochandi. So again you get a question bank. The more and more you practice, it will be good for you. IAS gadget ରେ ବି ସେୟା ଅଛି last को क्वेश्चन नहीं practice पे Books are same. Books are same. For polity, Lakshmikant, completely Lakshmikant, only and only Lakshmikant. For prelims and mains. Mains by mains 365 ki Jayati Doshan you can see. But for prelims, only Lakshmikant. And given the PT 365, jota current affairs by. History by hoji ancient history pai mu padthili RS Sharma padthili NCERT ro. Tapare medieval pai I had followed my coaching institute. Medieval history is not that important. Semane khali terms pacharanti ki ei term ro mane ta kona. So apna if you are smart, when you get to know it, when you get to know ki questions kon pacharuchi, apna khali sei terminology kariki bahut bada YouTube re series bhi achi medieval history terms. Apna khali segula bhi bolo ki thoroughly dekhi paribe. So I had done that. And modern history pai spectrum, that book completely spectrum ko barambar padichi. I think I have read it more than 15 times. Kota that is required. Also since I was preparing for 2-3 barsa bhi hei jaitila mane exam dei. So and tapre science and technology pai only the material, institute material. Science and technology should be more focused towards the current happening. Semana pacharnandi recycling visare pacharnandi. They are asking the new technologies, AI re kon hochi ki 3D printing and all that. Tapre geography only NCERTs for both prelims and mains. माने बहुत information तादर अच्छी. आपन को just जानवर अच्छी कि prelims रे को information टा लगेबी, mains रे सही information टा केमिति बड़ो करके रखिबी, केमिति सही diagram volcano देइछि, how will I draw a volcano कि जदि किछि current wind current की water current विषय रे question आसीछि, how fastly I will draw that world map and how can I show the currents फटाफट. So you should know the presentations there. But NCERTs are enough. Our class रे भी अपन को पढ़ाइबे, so you will get a little bit of more material for that. How कौन रहेगा? For main specific topics, society रे जेमति questions आसे, like women empowerment, globalizations, से गुड़ा सब questions बारंबार सही topics रा आसुची. So what you can do is that सही questions पाई you can have a format of your own. आगुरो prepare करके रखी दियंतु. ये जदि women ऊपर question आसला कि how globalization has impacted women. कि how globalization has impacted tribals. So theme टा यार कौन? Globalization. Tribal is just an add-on. So अपना ता आगुरो गोटे globalization गोटे prepare करके रखी दियंतु कि एटा introduction हबो, एटा conclusion हबो. These are the factors, push and pull factors. So जहाँ भी सेटा को कर दियंतु. So that you can also do it for GS3 रो जो internal security अच्छी. जेमति कि नक्सलिज्म हे गला कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से गला. सो ता पई भी आगुरो किछि गोटे फर्दर मटेरियल प्रिपेयर कर रखि दैथिबे, दीटा शीट रे प्रिपेयर करके रखि दैथिबे. एंड दैट शुड सी नोट्स ता भी एते एक्सटेंसिव करिबे नै, पूरा फुल लाइन लिखिबार नै, ओनली द वर्ड्स लाइक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रे द एग्जांपल्स कोठी कोन होउची. सो ए कीवर्ड्स जदी लिखि के रखि दोछंती, दैट विल हेल्प यू इन राइटिंग मेंस. So again these topics are not in prelims, so darkar nahi. Au prelims re au kon topic rahi gala? Culture ta bhi culture pura specifically padhantu, jaha question aschi semti. Bhakti Sufi important. How to know they are important? Previous year questions dekhantu, apna jani paribe sei frequency of question, how it is getting repeated. You will get to know that this is important. Bhakti Sufi is important. Indian paintings, architecture, they are important. So sei topics guda ko pura thorough karibar achi. Baki topics guda, if you have time, you can look into it depending upon the cost benefit ratio. And how kon topic rahela? IR also you can do that. IR ro jaha darkar mains pai aur prelims pai, they are different.
सो मेंस पे आपन को जानिबार अछि कि हु आर द कोड तर हेडक्वार्टर टा कोन तार हु आर द कंट्रीज दैट दे आर इन्वॉल्वड when it is established and all that, but mains by you should have tar trade ta kete what how it is helping India, how it is helping that partner nation, what are the issues that we have, let's say with US, what are the issues, what are the emerging issues that we can have and how to solve it. IR by if you are very much jodi apan ko IR is a very good topic, it is a very interesting topic also because every day apan Insta reels if you open it into tale bhi apan ko mili jiba prime minister and foreign minister they say something good about the international relation, so those quotes also you can just jot it down if you find it good and you can write it in that IR answers. So Subagalani. Right. So my interview in OAS, it was basically my first interview of my entire life because I didn't sit for any placements. I didn't have the options of placement first of all. So I was nervous, but yeah, interview guidance program plays a very important role. You should interview mate OAS re mate se mane basically मोर DAF विषय गोटे हमको CIF मिले candidate information form मते सेउथुरी पचारथिले अच्छा स्कूलिंग एटी करिचो what did you learn, I had written about my co-curriculars ता विषय पचारथिले why do you want to join OAS, that was also a question. In my UPSC interview that was very vague. First of all सेठी already because मु join करि देथिली state civil services, so they had this question like if you are in the state civil services why do you want to come for IAS, that was a question. Then what happened is that I was been given my home district for training that given on the basis of rank and availability in OAS. So they had asked me a question regarding that with a gender perspective nahi ki is it right that they are giving their home districts for training to women candidates, that was a bit of question. Then Mission Shakti in Odisha is very famous throughout India, so there were questions regarding that. तापरे I have studied from D1 JNU again DAF रे लिखा इतला, so तापरे गोटे question पचारथिले कि which university you found to be helpful and which what is the difference between the techniques that is used in pedagogy in DU versus JNU. So those are the questions. Again right now if I am thinking about it I am not able to even remember what was the question what I answered because that moment is so surreal, full of so many anxieties, so much, but yeah you can only reduce the anxiety only through a lot of practice. जेमती कि very good आपण questions पचारुछंती, you are not having that fear कि friction कि गोटे मन भीतर hindrance रखुनांती, a very good thing. Start asking doubts, start conversing with your peers in English, in like just start it from today. Just think yourself you are an officer, सेठी बसिबे आपण interview देबे, that is not the end. या परे भी बहुत कहया को पड़िबो, मीडिया को कहया को पड़िबो, you have to solve the situation. रियॉट हे गला सेठी आपन को सॉल्व करिया को पड़िबो, you have to deal with also different stakeholders. So how do you deal with that? It will come with practice if you start it just from today. ठीक है? ठीक अछि. Topic as in are you saying complete history की हाँ माने क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़िल ठीक अच्छी क्विट इंडिया मूवमेंट एमसीक्यू स्पेसिफिक बुक्स भी आसे से क्विट इंडिया मूवमेंट जति 10-12 क्वेश्चन थिबो ट्राई टू सॉल्व इट देन गो टू प्रीवियस क्वेश्चंस पूरा डाउनलोड करके रखिथिबो ठीक अछि जीएस 1 ने तुमको मिल जिवो क्विट इंडिया किछि क्वेश्चंस आसी छि कि लास्ट पास्ट इयर्स रे अच्छा इफ देयर इज 1 or 2 क्वेश्चन लेट मी ट्राई अटेम्प्टिंग इट ठीक अछि एंड दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल आई गिव बाकी सब सेंति हे जिवो पूरा रख माने ऑप्शनल शुड बी doesn't matter if you have it in graduation or not at all. Optional should be based on some of the factors like आपनकर interest केते अछि, that is also not like that is also 30 to 40% of the criteria. हाँ optional ले
again sources exactly sources दरकार and syllabus टा भी कम ହେଇଥିବା दरकार you do not like history some of us love history love reading history but history रे optional ले we get it ancient medieval modern ही जाउची too much of syllabus to cover unless you love history so much that पूरा आपण सेटा भलो कि लिखि परिबे that is another thing again syllabus टा कम ହେଇଥିବା दरकार material बहुत मिलुଥିବା दरकार some of the anthro socio बहुत easily मिल जाए and they are also scoring आपण को trend भी देखिबार अछि कि scoring टा केते सेगुडा सब देखि के ऑप्शनल लियंतु ऑप्शनल जदि आपण पूरा क्लूलेस अछंती कोन नंबर अछि दि तीन मास सेठी क्लास सरी जाऊ some of the topics you will really like you might like geography you might like history you might like sociology किछि टॉपिक्स आपन बहुत भल लागिवो सो कोन करिवे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखंतु ऑप्शनल ले सेगुडा खोली के देखंतु कि क्वेश्चंस को बेले आसुची क्वेश्चंस बुझा पडुची कि नाही आगे ठीक अछि क्वेश्चन जदि बुझा पडुची then you get know कि ठीक अछि if I have sufficient material I can write it go to the previous year questions and try to get it ठीक अछि हाँ होम साइंस तो आई कैन वाउच फॉर इट होम साइंस रे म खाली एप्टी प्लस पढ़ के जाइतिली दिस इज ऑन रिकॉर्ड सो एप्टी प्लस रे दीटा बुक मिले बाहर मार्केट रे मिलथला सो आई हैड रेड दैट आल्सो सेथुर भी म नोट्स करितली फॉर पेपर 2 टिके सेतेले जते म पढितली 2020 रे 3 इयर्स बैक नाउ सो सेते टिके माने हैप्पीजेट लिखा आइतला सेतेले सो आई हैड प्रिपेयर्ड नोट्स आउट ऑफ द पेपर 2 सो दैट वाज माय बेस मटेरियल तापरे किछि किछि टॉपिक्स पई आई हैड रेफर्ड एनसीईआरटी मटेरियल एनआई सॉरी एनसीईआरटी नु एनआईओएस रो किछि मटेरियल मिले सो सेगुडा तादर भी नोट्स कर देइथली आउ छि कि देखो हाउ टू माने even the book that I followed those books I followed सेतरे किछि माने एते डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन नथिला so for diagrams I used Google माने किछि टॉपिक अछि how to use a diagram or a flow chart जदि incorporate करि हबो सेई टॉपिक रे so I used Google extensively for that so and that was enough home science रे जत्ते बड़ बड़ आंसर्स आपण लिखि परिबे because किछि किछि टॉपिक माने for example जे खाली सीरियल्स विषय रे पचरछि that is so small that खाली सेति लिखिला हबनी so add on करिवा पे पड़िबो राइट लॉन्ग आंसर्स जो होम साइंस इज वन ऑफ इन फॉर ओपीएस आई थिंक इट इज अ वेरी गुड ऑप्शनल माने एते टाइम भी दबा को पड़िबनी बट इट इज इंटरेस्टिंग आल्सो ओनली आपन खाली सेठी सिंस अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव होम साइंस केमिति आंसर टा को टिके डिफरेंशिएट करिवे हाउ टू हैव दैट अप्रोच प्रेजेंटेशन स्किल टा को ऊपर आपन को ध्यान दबा को पड़िबो रेस्ट आई थिंक इजी इट इज इजी एक्चुअली PSI are optional. I have never read PSI optional, so I cannot say. But I think PSI are optional. There is one or two very good reputed coaching institutes जोटा समझते follow करंती. Please ask somebody जो मैंने पढ़ी थी बेस इटा clear करते हुए. Again, look the previous year questions. If you feel कि questions बुझा आसी जाउची, ताले you can look more into it. ठीक है बाकी I'll just say कि just some few words. माने I never expected when I was also preparing जतले मैं first attempt देइथिली in my GS I had score of around 60 the UPSC कथा कहूची OPSC पई तो मैं बहुत पढिथिली actually and I own that but UPSC पई जब मैं first attempt देइथिली I had around 60s in both the first papers I was devastated मते लागले कि 5 वर्ष दिल्ली रे रही के आसीची उते टाइम देलेनी कोन एते खराब मार्क्स चाहिए devastated but again I had to start it from the beginning जहा जहा माने I got to know थोरे एग्जाम दे बट सेटर बहुत भूल भी करथिली मु ना मु टेस्ट सीरीज देइथिली ना मु घरे रह के आराम रे पढथिली I did not have that stimulated environment कि एग्जाम टा केमिति को एनवायरनमेंट रे दियावे सेटा नथिला I got to know all my faults through that first prelims and तापरे I think I had a lot of changes करथिली मोर शेड्यूल रे कोन केमती फोकस करिवि नोट मेकिंग ऊपरे so that helped me a lot but for you also since you are all starting see energy ta bahut high rakhibe spirits pura high rakhibe just it's not wrong to be a little you know self centered preparation ne know ki your time is very limited कोटी spend करिवार अछि completely your discretion tikke selfish nature ta rahu because again it is a cutthroat competition then एटा भी रखि थांतु मने रे कि केतेटा अटेम्प्ट आपन को दबार अछि समस्त को बेटा डिफरेंट you might want to give 3 attempts 4 attempts 6 attempts all the attempts again depends on you आपन को support system केते
फाइनेंशियल कंडीशंस केते आपनकर बैकअप केते अछि आपनकर आपनकर मेंटल स्ट्रेंथ केते अछि सेटा भी फोकस नै रखथांतु कारण एगुडा क्लियर हे गेले ना इफ यू आर जस्ट क्लियर कि नै मते बस दीटा अटेम्प्ट ही दबार अछि सो आपनकर पूरा पूरा एनर्जी ता चैनलाइज हे जबे कि ठीक अछि दिस 2 इयर्स और 3 इयर्स आई विल गिव इट फुल्ली नहले तो ठीक अछि आई विल डू समथिंग एल्स बट सेटा गोटे क्लियर होइतबा दरकार आपनकर माइंड रे so these all broad things baki once you come into service the amount of respect that you will get is unparalleled and you will have your own voice mane you matlab nobody will be there to say you that you are not good enough or you can't do that apna sei position he jaithbe that you can take up any of the initiatives you can have a name of your for yourself and this is a very good motivation should work for you all the very best guys. What's the confusion?